Hello everyone, very good afternoon to all of you. In the last class, I discussed about some important concepts related to agriculture sector. I discussed the significance of agriculture sector, in which we are discussing about political, social, economic, technological, and environmental, as well as the international significance of the agriculture sector. Now, I will discuss about the distress cycle in the agriculture sector. See, this is a cycle. Cycle means what? The distress cycle means what? This is a chain system, a step by step chain system. In the first step, I have taken here the agrarian crisis. Let's say due to any reason, I will discuss about the reason. Let's say that due to any reason there is crisis in the agriculture sector, which is called as the agrarian crisis. And agrarian crisis will definitely lead to low farmers' income. Farmer cannot generate more income with when the agrarian crisis will be there, because there will be less output, there will be less product, and hence the farmer will not be able to sell those products in the market, and hence the total output or the total income of the person will decrease. When the farmer's income will be low, definitely the farmer will be not able to pay the debt. जो लोन आनिथिबो the loan amount payment करिया ପାଇଁ सिए capable हबनी, incapable हे जिवो. When there will be more financial burden जेतबेले अधिक होय जिवो, then the farmer will commit suicide. There will be farmer suicide. Farmer suicide we discussed in the last class. Key again, that will lead to political agitation, and there will be many political parties, those who will be there, those who will demand for the loan waiver. So loan waiving kariya pai kaibe, and loan waiver automatically that will lead to again fiscal deficit, because government revenue jetika revenue to government expenditure badi jibo. When the expenditure increases, then that leads to fiscal deficit. So fiscal deficit को minimize करिया ପାଇଁ से gap को government एटी कौन करिवो, government will borrow money. काटू money borrow करिवो, ये international करि पारे, internally means inside India RBI करि पारे बा international agency मान को भी एटी government borrow करि पारे. So fiscal deficit जेतेबेले बढ़िबो, automatically investment low होइजिवो, there will be more financial burden upon the state or the government as well, and again that will lead to agrarian crisis, because low investment in the sector of agriculture. प्रत्येक सेक्टर डेवलप होबा ପାଇଁ हमको एग्रीकल्चर दरकार, माने सॉरी प्रत्येक सेक्टर डेवलप होबा ପାଇଁ हमको इन्वेस्टमेंट दरकार. यदि इन्वेस्टमेंट न होए, if there will be no investment, then definitely that will again lead to the agrarian crisis. So here I will discuss about one policy, that is submission on agricultural mechanization. Agricultural mechanization कहले use of the mechanical technology in the field of agriculture को बुझाइता है. So हमें देखिबा कि केमती ए मिशन अनुसार केमती mechanical mechanization by agriculture sector को केमती utilize करा जाउछि. Basic objective, the most important objective of the mission is to increase the reach of farm mechanization to the small and marginal farmers. Small और marginal farmer मान को पाखरे ये farm mechanization को पहुंचवा ପାଇଁ चाहूची, and to the regions where availability of farm power is low. जो जगह farm power availability low अछि, ये submission on agricultural mechanization को पहुंचवा को चाहूची. The next is to promote the custom hiring centers to offset the adverse economies of the scale arising due to the small land holding and high cost of individual ownership. ये मेकानिकल बट टेक्नोलॉजी को जेमती फार्मर रो प्रॉफिट अधिक होई परिबो, से पर्यंत केमती सही एक्सटेंट पर्यंत केमती यूटिलाइज होई परिबो, से ऊपर डिस्कशन करछि. नेक्स्ट इज ये कुछ हाई टेक्नोलॉजी एंड हब क्रिएशन पई, हाई वैल्यू फार्म इक्विपमेंट क्रिएशन करिया पई, परफॉर्मेंस टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन क्रिएशन करिया पई ये डिफरेंट टेस्टिंग सेंटर्स क्रिएट करछि. आई विल डिस्कस अबाउट द नेम ऑफ द टेस्टिंग सेंटर्स. प्लस ये डिफरेंट जो माने स्टेक होल्डर अछंती, एटी एग्रीकल्चरलिस्ट हे परंती, फार्मर हे परंती, जो दोज हु आर प्रैक्टिसिंग और डूइंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, से माने भी हे परंती. तो एमान को भितर ये कोन चाहूची नै, जो स्टेक होल्डर अछंती, स्टेक होल्डर मान को इंक्लूड करियो को चाहूची, अवेयरनेस वेटी क्रिएट करिया पई चाहूची, कैपेसिटी बिल्डिंग से मान कर करिया पई चाहूची. जहाँ जहाँ डिस्कशन कले ऑब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव पाखरे पहुंचवा पई ये मिशन कोन कोन अडॉप्ट करिया को चाहूची ना, डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेटजीज अडॉप्ट करछि. तो फर्स्ट स्ट्रेटजी इज द कंडक्टिंग द परफॉर्मेंस टेस्टिंग फॉर वेरियस फार्म मशीनरीज. माने न तो टाटा गोटे ट्रैक्टर बाहर करछि बा पावर टिलर प्रोडक्शन करछि, यदि तार परफॉर्मेंस टेस्टिंग न करा जाय कि हाउ एफिशिएंट द
प्रोडक्ट इज यार एनवायरमेंटल इंपैक्ट अछि कि नाही, लोकल माने ऑन द सरफेस सॉइल पर इंपैक्ट अछि कि नाही, ग्राउंड वाटर ऊपर किछि इंपैक्ट पड़ुछि कि, एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन करूछि कि, अधिक एनर्जी रिक्वायरमेंट अछि कि, ये सब डिस्कशन करिया पड़िबो बा ये सब को परफॉर्मेंस टेस्टिंग करिया पड़िबो। सो फॉर दैट पर्पस परफॉर्मेंस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करा जायछि। Then the promote farm mechanization among the stakeholders by the way of on-field and off-field training and demonstration. On-field और off-field demonstration पहले कौन बुझंती जदि नुआ पावर टिलर बा हार्वेस्टर बा कटर आछि ताको हमें on-field in the field itself हमें बुझाइबा फार्मर को केमति ताको यूज करिया दरकार बा off-field ताको डेमोन्स्ट्रेट करिबा कि तार केमति यूटिलाइजेशन होबा दरकार बा ताको केमति व्यवहार करिया दरकार। या सहित जो मशीनरी देखुचंदी ये मशीनरी गुडकर प्राइस अधिक होता है। फॉर दैट पर्पस जदि अधिक प्राइस अछि मशीन मानकर फार्मर ताको निजे डायरेक्टली प्रोक्योर बा परचेज करि परिबोनी। सो फार्मर शुड बी प्रोवाइडेड विथ फाइनेंशियल असिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ आइदर ताको लेस इंटरेस्ट रेट ऑफ फॉर लोन दिया जिवो बा बिना रेट ऑफ इंटरेस्ट पकाई कि लोन प्रोवाइड करा जिवो सो दैट द फार्मर विल परचेज दोस प्रोडक्ट्स फ्रॉम द मार्केट एंड यूटिलाइजेस। सो यही कारण पई अछि हम पाखरे सेंट्रलाइज्ड फार्म मशीनरी परफॉर्मेंस टेस्टिंग पोर्टल गोटे ऑनलाइन पोर्टल क्रिएट करा जायछि जोथरे फार्म मशीनरी प्रोडक्ट जेमति मु कहली ट्रैक्टर को पावर टिलर को हार्वेस्टर को ये सब को टेस्टिंग पई एथरे एप्लीकेशन जो कंपनी प्रोडक्शन करछि करि परिबो। तो टेस्टिंग सेंटर इंडिया रो अछि मध्य प्रदेश, हरियाणा, आंध्र प्रदेश एंड आसाम ए चारिटा जगह रे अछि फार्म मशीन टेस्ट ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग सेंटर। ये फ्लो डायग्राम रे मते देखि कि हाउ केमती फ्लो करे हमर एप्लीकेशन हम केमती प्रोवाइड करि परिबा का एप्लीकेशन दबा टू द जो टेस्टिंग करिया पई प्रोडक्ट टेस्टिंग करिया पई केमती कंपनी एप्लीकेशन दबा एंड कोन कोन प्रोसेस ले ताको फ्लो डायग्राम देखै छी यू कैन चेक इट आउट वंस। द नेक्स्ट हम वर्तमान देखिबा फार्मर एग्रारियन डिस्ट्रेस ऊपर हम डिस्कस करथिली। तो एग्रारियन डिस्ट्रेस ऊपर आउट अधिक डिस्कशन करिबा। व्हाट आर द कॉजेस ऑफ एग्रारियन क्राइसिस इन इंडिया। इंडिया रे एग्रारियन क्राइसिस हवार रीजन कोन कौन by agrarian crisis? The first is the uneconomical fragmented land holding जदि देखिबे इंडिया रे ताली ये uneconomical बा fragmented हेकि रहिछि। गोटे फार्मर लैंड जदि गोटे छोटो ए जगह अछि पुन नेक्स्ट 5 किलोमीटर पर आ गोटे छोटो लैंड आउ 2 किलोमीटर पर आ गोटे छोटो लैंड सो ये इकोनॉमिक बा बेनिफिटेड हबनी फार्मर ए जगह बिकॉज़ ट्रांसपोर्टेशन ताको अधिक टाइम पळेबो बस मैनेजमेंट भल भाव करि परिबनी। एति पय हमु कोन दरकार फ्रैगमेंटेड लैंड नहि जदि गोटे जगह तार अधिक लैंड रहबो देन डेफिनेटली इट इंक्रीज हमें करि परिबा। द नेक्स्ट इज द स्टैग्नेंट प्रोडक्शन। यदि हम प्रोडक्शन देखिबा इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम रे ये भी धीरे धीरे आइदर डिक्रीज करूची या तो ये स्टैग्नेंट अछि। ये जदि इंक्रीज करता ऑल ऑफ सडन जदि डेवलप होई चलंता अधिक प्रोडक्शन होंदा ऑटोमेटिकली फार्मर पाखरे प्रोडक्शन अधिक कले सीता बिक्री करियो मार्केट रे एंड किछि इनकम करि परिबो सो दैट एग्रारियन क्राइसिस होबनी। द नेक्स्ट इज द इनपुट कॉस्ट। इनपुट कॉस्ट कहले हम कोन बुझंती इनपुट रे आसुची हमर इरिगेशन फैसिलिटीज हमर इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड हळ करिया पई जमी हळ करिया पई ट्रैक्टर पावर टिलर ये सब जिंस आस्तुंदी इनपुट पैरामीटर रे इंक्लूडिंग द हाई यील्ड वैरायटी सीड्स। जदि इनपुट पैरामीटर मानकर प्राइस देखिबो देन मानकर प्राइस बहुत अधिक हाई इनपुट कॉस्ट फॉर द इनपुट इज वेरी हाई फॉर द फार्मर्स। तो फार्मर जदि अधिक टंकाटी इनपुट रे खर्च कला एंड आउटपुट हम देखले कि लेस आसुची तले तार इनकम ही आसीबनी प्लस तार फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पर निजर लेबर अछि निजर एंटरप्रेन्योरशिप अछि बा निजे काम करथिला तार वैल्यू अछि। तो प्रथम कथा इनपुट कॉस्ट रेट हाई एंड द सेकंड थिंग इज दैट द फार्म रेवेन्यू इज लो। दीटा जाको को मिसै कि हम डुअल स्ट्रेस बोली कहि परिबा एठी। डुअल स्ट्रेस इनपुट कॉस्ट इज वेरी हाई एंड द फार्म रेवेन्यू इज वेरी लो सो इट क्रिएट्स अ बर्डन अपॉन द फार्मर इटसेल्फ। द थर्ड इज द प्राइस रिस्क कहले हम कोन बुझंती ना जेतबे फार्मर बिक्री करियो मार्केट को जाउची तार प्रोड्यूस्ड मटेरियल रो वैल्यू जदि ठीक न रहे ठीक प्राइस रे जदि से बिक्री न करे तो जते दिन से काम करथो तार किछि वैल्यू रहबोनी। वर्तमान देखुतबे किछि दिन तळे देखितबे टमाटर प्राइस डिक्रीज हे गला सो बहुत अधिक टमाटो कुछ माने 10 टका 15 टका रे 20 किलो 30 किलो लेखा टमाटो बिक्री कले बहुत गुड मेनी फार्मर्स दे डिस्ट्रॉयड देयर प्रोडक्शन इन द फील्ड इटसेल्फ सेवन तक आनिलेनी घर सेठी नष्ट करदेले। सो याडे हाई इनपुट कॉस्ट इज हाई प्रोडक्शन इज लो हेला लो फार्म रेवेन्यू एंड द थर्ड प्राइस रिस्क। तो प्राइस रिस्क आसुची अगेन दैट लीड्स टू द agrarian crisis by ये agrarian crisis को बढ़ी चलची।
The next is the monsoon. Over reliance upon the monsoon, or over dependency upon the monsoon. Indian agriculture is completely dependent upon the Indian monsoon, and Indian monsoon is a very complicated, sensitive phenomenon. Any change in the atmosphere, any change in the oceans, that will change the monsoon pattern in India. प्रत्येक वर्ष जब monsoon को analysis करेंगे देखिए सेम डे रे ये प्रति वर्ष अराइव करूनी बा ये गोटे पर्टिकुलर जगह रे पहुंचुनी रादर एथिरे बहुत गुडे फैक्टर एसोसिएटेड हेकि रहिसंती जे इन्फ्लुएंस पकोचंती एंटायर क्लाइमेट ऊपर ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज ये सब पई मॉनसून इराटिक नेचर हो जायछि एंड ये कंटीन्यूअसली आसुनी येला प्रथम कथा द्वितीय यदि मॉनसून कम हो गला ऑटोमेटिकली इरिगेशन फैसिलिटीज एठी कम हो जाउछि इरिगेशन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट इनपुट फॉर द एग्रीकल्चरल सेक्टर जदि इरिगेशन न हुई ऑटोमेटिकली सब बंद हो हाई यील्ड वैरायटी सीड थाउ इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड थाउ बट विदाउट इरिगेशन केबे भी प्लांटेशन और प्लांट ग्रो करबनी बा फार्मर को केबे भी प्रॉफिट होबनी सो तो ओवर रिलायंस ओवर डिपेंडेंसी अपन द मॉनसून हो जाउची अधिक हम डिपेंड करचंती ऑटोमेटिकली इरिगेशन फैक्टर भी कम होउची इरिगेशन फैक्टर रे कमी रहले ये प्रोडक्शन कम होउची प्रोडक्शन कम होले ऑटोमेटिकली ये अगेन डिस्ट्रेस होउची agricultural distress create होची the next is the public investment केवल agriculture sector नुहे rather प्रत्येक सेक्टर रे इन्वेस्टमेंट रे आवश्यकता रही प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर रे सो इन्वेस्टमेंट जते बेले कम हो जाए गोटे सेक्टर रे ऑटोमेटिकली दैट विल लीड टू इन्वेस्टमेंट कम गले कैपिटल फॉर्मेशन कमी जो कैपिटल फॉर्मेशन कमी गले प्रोडक्शन कमी जो आउटपुट कमी जो सो ए जगह रे को माने इंटरफेयर करबा दरकार बा इन्वॉल्व हुआ दरकार इन द कैपिटल फॉर्मेशन और इन द इन्वेस्टमेंट देयर आर टू सेक्टर्स पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर बोथ द सेक्टर्स दे शुड इंटरफेयर इन द कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन द एग्रीकल्चरल फील्ड बिकॉज़ कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहले प्रोडक्शन बढ़ी परिबनी द नेक्स्ट फैक्टर इज द क्लाइमेट चेंज देखो क्लाइमेट चेंज रो बहुत इंपोर्टेंस रही बा सिग्निफिकेंस रही अपन एग्रीकल्चर एनी टाइप ऑफ स्मॉल चेंजेस in the climate that will affect the fertility of the soil that will affect the pest that will affect different type of diseases it will cause degradation of the groundwater depletion of the water soil erosion soil fertility loss so different type of activities ये create करिवो गोटे chain of reaction chain of series action एटी create हबो जहा द्वारा एग्रीकल्चर सेक्टर रे डिस्ट्रेस आसीबो बा ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन कम हे चलियो The final factor is the overcrowded population. यदि population अधिक population depend करचंती agriculture sector ऊपर then definitely ये भी गोटे problem यदि एते अधिक लोक एटी काम करिवे काहे कि ना अधिक ह्यूमन रिसोर्स काम कले जेमते हम डिस्कस करथले disguised unemployment will be finding disguised unemployment marginal productivity is very less in this case so ये भी गोटे इशू कि disguised unemployment less use of the technology and the less investment as well the next factor is about the policies of the government policy कहला हम कोन बुझंती जेमति green revolution was successful only in certain regions because those regions where the policy was only related to those regions बा हम कहि परिबे से policy सही section मानकर सही region मानकर भलो भाबरे काम कला अलका जगह रे ये काम करि पालनी for that purpose that was unsuccessful in many regions तले हम कोन करा दे परिबे जो policy अछि गवर्नमेंट रे ताकू ठीक भाबरे यूटिलाइज करबा दरकार रिसेंटली देखिथिबे गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा रो योजना आसला कालिया योजना एंड तापर न्यूज़ पेपर कंटीन्यूअसली न्यूज़ आसला कि देयर इज मिस एलोकेशन ऑफ द फंड इन द कालिया योजना एलोकेशन मिस एलोकेशन हले जो माने न पाइबा कथा से माने पाइले देन द ट्रू बेनिफिशियरी जे पाइबा कथा से लोक पाइबनी एंड ऑटोमेटिकली दैट विल अगेन लीड टू द डिस्ट्रेस इन द एग्रीकल्चर सेक्टर यदि एग्रीकल्चर सेक्टर डिस्ट्रेस हुए देन दैट विल लीड टू एग्रारियन क्राइसिस यदि से एग्रारियन क्राइसिस हुए तार कॉन्सिक्वेंस कोन कोन हो definitely there will be low income for the farmer pakhe the income come हुए automatically the person will have to live in the absolute poverty then indebtedness तार लोन बढ़ी बढ़ी चलिबो से डेब्ट सुझी परिबनी ता लोन सुझी परिबनी ता लाइवलीहुड अनसस्टेनेबल हे जिवो दैट मेन लीड टू सुसाइड ऑफ द फार्मर सुसाइड करि पारे फार्मर माइग्रेशन करि पारे रूरल टू अर्बन रीजन को बा कंप्लीटली द फार्मर मे लीव द एग्रीकल्चर कंप्लीटली बंद कर दे पारे एग्रीकल्चर सेक्टर रे काम न करि पारे ये सब होतन डिफरेंट consequences of your distress in the agriculture sector the next time देखिबा लोन vulnerability बा लोन वेव करबाटा ठीक ना बोल हम डिस्कशन करथले फार्म लोन को वेव करबाटा ठीक हो ना बोल हो ये आर्गुमेंट इन फेवर ऑफ द वी कैन डिस्कस एंड अगेंस्ट दिस वी कैन डिस्कस फर्स्ट हम आर्गुमेंट इन फेवर ऑफ डिस्कस करबा कि लोन वेविंग हबा उचित जदि हबा उचित कोन पाए जदि लोन वेवर आमे कर दोछन प्रथम कथा फार्मर को गोटे शॉर्ट टर्म रे गोटे रिलीफ मिल जिवो किछि दिन पई तको रिलीफ मिल जिवो से टेंशन रे रहबनी सो दैट द पर्सन विल बी मोर इंटरेस्टेड फॉर हिज जॉब से जो काम करथला एग्रीकल्चर करथला प्रैक्टिस
ठीक भाव से एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करि परियो फर्स्ट कथा तो सेकंड इज इट विल बी अ ऑब्लिगेशन अपॉन द स्टेट obligation upon the state काहे कि it will be like a moral obligation upon the state farmer ପାଇଁ କିଛି କାମ କର because we are talking about the welfare state means maximum happiness to the maximum people because maximum happiness to maximum people ଉପରେ କହୁଛନ୍ତି at that point of time farmer is also included in the term of maximum people 54% of the population they are working in agricultural sector so farmer development भी कम करबा गवर्नमेंट रो moral obligation हवा दरकार the next is फार्मर वल्नरेबिलिटी के ये कम कर दो जो फार्मर सुसाइड करछंती फार्मर इन तर डेप्थ न सुझी परिवा कारण इटी सुसाइड कर दोची सो ये सब जिंस धीरे धीरे कम हो बा फार्मर को ये गोटे शॉर्ट टर्म रिलीफ तो दब प्लस ये जमते वल्नरेबल करतला कि नाही फार्मर सुसाइड करू फार्मर किछि नेगेटिव स्टेप नो एडवर्स स्टेप नो ये सब जिंस होबनी ये सब जिंस रे ठीक है जो तो नेक्स्ट इज आर्गुमेंट्स अगेंस्ट जदि हम करियो कि नहीं फार्म लोन दिया न छिवा दरकार प्रथम कथा हला फार्म लोन दोउची के ना गवर्नमेंट देले गवर्नमेंट ऊपर ऑलरेडी फिस्कल रिस्पांसिबिलिटी बढ़ी बढ़ चलिबो फिस्कल डेफिसिट बढ़िले गवर्नमेंट को एठी लोन करिया को पड़िबो एंड इट विल हैव इंपैक्ट अपॉन द गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट जो जगह रे इन्वेस्टमेंट करिया कथा अदर सेक्टर अपार्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर सी सब सेक्टर ऊपर इंपैक्ट पड़िबो तो नेक्स्ट आउ कोन प्रॉब्लम ही पारे लोन वेवर इज नॉट द सफिशिएंट एंड दैट इज नॉट द पैनेसिया केवल लोन वेव ऑफ कर देले जे ठीक है जो एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलप कर जो एमती नाही लेटर रादर जति की अमाउंट जति की क्वांटिटी रे टंगा हमको दरकार लोन वेवर पई माने गवर्नमेंट पाकर अछि जति ताटू अधिक रिक्वायरमेंट रही ठीक अछि ये होची आ गोटे प्रॉब्लम की एति पई हमें एग्रीकल्चर सेक्टर पर लोन वेविंग न करबा दरकार द नेक्स्ट इज रूट कॉज हमें क्राइसिस रो रूट कॉज जानिबा दरकार कि एग्रीकल्चर सेक्टर डिस्ट्रेस काहे की होची फार्मर सुसाइड काहे की करछ खाली तक लोन वेव अप कर देले त ठीक हे जीवो सेटा में ना रिसर्च रो जानि छथि ना एपर हम कंफर्म होई छथि सो फर्स्ट हमको एटी कंफर्म हुआ पड़िबो कि जिंसो ठीक ना जिंसो माने लोन वेविंग कर देले फार्मर कंडीशन डेवलप होबो ना डेवलप होबो प्लस लोन वेव अप जते करि कर चलबे इन्फ्लेशन माने इकोनॉमी पर इंपैक्ट पड़िबो इन्फ्लेशन बढ़ी बढ़ चलिबो पब्लिक इन्वेस्टमेंट कमी कमी चलिबो प्लस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ऊपर भी ये इंपैक्ट पकेबो तो यार डिफरेंट इंपैक्ट रहिबो is these are the these points are against the farm weaving sorry against the loan waiver against it. So in this session we discussed the distress cycle in the agriculture sector and some issues associated with or the consequences of the distress. Next we will now discuss concept related to GM crops, genetically modified crops. What is a GM crop? GM or the transgenic crop, it is a plant that has a novel combination of the genetic material obtained through the use of modern technology. देखो जेमति नॉर्मल पोलिनेशन प्रोसेस हुए नेचुरल पोलिनेशन प्रोसेस से प्रोसेस रे पोलिनेशन करी हमें किछ आर्टिफिशियल वे रे पोलिनेशन करबा कोन पई करबा ना बिकॉज़ टू मेक द प्लांट मोर स्ट्रांगर काहे अगेंस्ट स्ट्रांग करिया पई ना मे बी गोटे पेस्ट बाय इंसेक्ट अगेंस्ट रही पारे बा क्लाइमेट रेजिलिएंट रही पारे क्लाइमेट अगेंस्ट रही पारे अन्य तो क्लाइमेट चेंज होची क्लाइमेट चेंज होबा कारण देयर इज मोर रिक्वायरमेंट ऑफ द इरिगेशन फैसिलिटीज तो हम इरिगेशन फैसिलिटीज दबा को चाहनांती कम इरिगेशन ने क्रॉप को हम डेवलप करिया को चाहछन बा इरिगेशन फैसिलिटीज अवेलेबल नाही सो व्हाट कैन यू डू एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हम तो जीएम क्रॉप करि परिबा व्हिच विल रिक्वायर मोर क्वांटिटी ऑफ वाटर जहा को कम वाटर रिक्वायरमेंट रही कम वाटर जहा को दरकार तो से सब को हम जीएम क्रॉप बोली कहउछन सो देयर इज insertion of the artificial gene जेमति natural process न करिके तो artificial gene insert करा जाए now the question is what are the benefits of the GM crop definitely there will be more yield high yield will be there so production जेतरा हम पकर अधिक होबो either हम ताकू यूज करि परिबा for the food security provide करि परिबा in the country first second हम export करि परिबा so export led agriculture we can practice so high yield again that will increase the production and increase in the production will increase the इनकम ऑफ द फार्मर्स जो फार्मर डिस्ट्रेस ऊपर वर्तमान डिस्कस करथले फार्मर सुसाइड ये सब दिन सब हवानी द नेक्स्ट रेजिस्टेंस यार अधिक इंप्रूव्ड रेजिस्टेंस लेस गेस्टेशन पीरियड यार मीनिंग होच के मैच्योरेशन टाइम पीरियड आर कम जदी 6 मास रे धान हो जाउतला देन जदी जीएम क्रॉप हम यूज करबा ताल से 2.5 मास 3 मास रे धान हो जाय पारिबो तो सेति पय आपको आदे मैच्योरेशन पीरियड GM crops रो genetically modified crops रो कम थाए the next is the food with medical benefit many times the researchers they found that these genetically modified crops they have medical properties गोटे certain type of banana अछि जो banana को यूज कला परे बा खाइला परे सेतर different type of एथरो medical benefit बहुत गुडे मिले and बहुत गुडे disease भी क्योर होता है
So the next is the achieve zero hunger by 2030. Zero hunger is always related to the more amount of production. जते production हम पाखरे बढ़िबो, जते quantity बढ़िबो, so that food will be accessible, food will be available, as well as that will be affordable for the all. समस्तଙ୍କ पाखरे ये पहुंची परिबो एवं समस्त को किनी परिबे. So we can achieve zero hunger by 2030. These are the potential benefits of the genetically modified crops. Now let's look into the potential risk of the genetically modified crop. ए पर्यंत यार इंपैक्ट ऊपर हमको कौन सी क्लैरिटी मिले ना रिसर्च एंड डेवलपमेंट ए पर्यंत कंप्लीटली यार प्रोज एंड कॉन्स मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऊपर डिस्कस करि नै बा हमको जाना नै एंड द सेकंड थिंग इज दैट माइट बी एन एलर्जेन ये गोटे एलर्जेन हिसाब रे भी काम करि पारे जोटा हम जानि नाथि जहां पर हमर नॉलेज नै द नेक्स्ट ये पोलिनेटिंग इंसेक्ट जो माने नेचुरली पोलिनेशन करूथिले ये पोलिनेटिंग इंसेक्ट मानको ऊपर इंपैक्ट पकई पारे बा से पोलिनेटिंग इंसेक्ट मानको नष्ट कर दे पारे कंप्लीटली सो नेचुरल स्पीसीज गोटे हम पाखरे डिस्ट्रॉय हे जिवो बास माने वल्नरेबल बा एंडेंजर्ड हे जिवे सो जो माने नेचुरल स्पीसीज अछंती देयर प्रोटेक्शन इज आल्सो आवर रिस्पांसिबिलिटी अदरवाइज से पर्टिकुलर स्पीसीज हमको किस दिन पर मिलिबेनी द नेक्स्ट इज यदि हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप को अधिक यूज करबा ताले इंडिजिनस स्पीसीज जोटा इंडिजिनस वेराइटी अछि सी भी हम पाखरे कम हे जिवो इंडिजिनस वेराइटी दैट मे बी अफेक्टेड द नेक्स्ट इज द टेक्नोलॉजी जीएम टेक्नोलॉजी ऊपर हमर कंप्लीट कंट्रोल नाही जेहेतु हमारा कंट्रोल completely नहीं and I can say this is an uncontrollable technology. In the near future it might have some issues, it might have some adverse impact upon the human beings. जार uncontrollable technology हेतिबा कारण प्रथमे हमको कंट्रोल करिया पड़िबो हमको बुझिया पड़िबो जे हमर pros and cons merit and demerits then we can use. The next is the adverse impact upon the soil. I can say not only adverse impact upon the soil, rather it may have adverse impact upon the atmosphere as well, upon the nature as well, upon other species as well. So first we need to do research and development. We need to come to a conclusion that these are the merits and demerits of the genetically modified crops. Then we should use it. So this is all about the genetically modified crops. In the next session, I will continue with the same topic. So जो माने Unacademy Plus subscribe करिनाती they may join to Unacademy Plus. You can use the referral code EasyOS. So by using this referral code, there will be 10% off of your subscription amount. EasyOS without any space. You can use this referral code. There will be 10% discount. 30th November ru OCS ପାଇଁ समीक्षा बैच स्टार्ट हबा को जाउची ये फाउंडेशन बैच प्री कम मेंस कोर्स रहबो ओडिशा सिविल सर्विस एग्जामिनेशन ପାଇଁ 2020 ପାଇଁ in that I will be discussing I will take up your economics and social development topic तो recently social development topic मु कंप्लीट करिछ Unacademy Plus रे and OS ପାଇଁ नुवा बैच 30th November स्टार्ट होची कंप्लीट डिस्क्रिप्शन पाई परिबे आपण डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे ये YouTube channel रो डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे सब्सक्राइब टू YouTube channel of the Unacademy and let's crack the exam you are trained for. Thank you everyone. See you in the next session.